यो अविजन कैसे हो भाई? कैसे हो भाई अविजन? What the heck is going on, bro? जो निजा भाई कैसे हो बोलो? निंजा पुलाव गेंशिनो इम्पैक्ट तो वेट मुझे कोनिकन में कुछ खास दिखा नहीं। शाव होता तो मैं कोनिकन में पक्का करना था।
Okay, so me also doing like nice bro. Make sure to like and subscribe जो जिसने भी अभी तक नहीं किया and कुंफू इसका क्या तुम I mean मैं इस कॉफ़ी नहीं कहूँगा तुम इसका एक नहीं करना मैंने से बात किया यस सर now what should I do कौन सा डोमेन करना चाहिए let me think which domain can be good for myself let me just do this on note I guess मैं इस कॉफ़ी सेव कर रहा हूँ मैं पूरा का पूरा प्रीमोज अपने जितने भी हैं सारा का सारा हम इस कॉफ़ी पे स्पेंड करेंगे जैसे ही इस कॉफ़ी आएगी ओके बेटर इट वर्ड्स ओके मैं इसे अब नहीं कर सकता क्या ओके माइंड मैंने नेट हो गया थोड़ा सा ओके ऑन स्नोट में कुछ नया आया है मुझे ऑन स्नोट में चेक करते कुछ नया आया है दैन पहले मैं अपने वो कहूँ भाई कमीशंस करने के रेजेंस ख़त्म करूँ थोड़ा सा क्या चाहिए मुझे रेजेंस में आर्टिफैक्ट राइट लेट्स गो नोट क्राई नहीं बुक्स फार्म करना पड़ेगा या बुक फार्म करना है बुक लेट्स गो जहाँ की मटेरियल मुझे चाहिए नोट कराए का चाहिए क्या नोट कराए में बुक्स कहाँ पे हैं वेयर आर यू बुक्स ओ हे भाई बहुत डिस्टेंस पे नहीं है तुम लेट्स गो तुम हम बिना डोमेन करने क्या तुमको भी ओके तुम हम बिना डोमेन करना है कि तुम्हें हेल्प चाहिए Livestream before yeah मैं हैंक चाहिए ओके ज्वाइन करूँ मैं अनेबल टू ज्वाइन भाई जोकर भाई ऑनलाइन है भाई This nigga is online bro तुम्हारा ज्वाइन नहीं कर सकता मैं तुम्हारा भाई जोकर ने डिक्लाइन कर दिया मे बी दिस पर्सन डूइंग समथिंग सस्पिशियस ओके मे बी आई कैन ट्राई okay मिस्टर जोकर क्वेस्ट कर ओ भाई क्वेस्ट में बिजी हैं आई मीन जोकर भाई क्वेस्ट में बिजी ओके फोर्टी नाइन के वेट 49 के गया क्या 49 के गया आई एम नॉट श्योर बट 49 के गया शायद डैमेज ऑलमोस्ट 500 के गया है फिंग्स का डैमेज आई कैन गेट इट अगर मैं थोड़ा सा और बेटर वेपन्स एंड उससे ट्राई करूँ तो टीम में गुड दिस इज़ गुड ये ओके दूसरे साइड पे यार बट ये दिक्कत है तो HP कंटिन्यू 3 कंटेंट्स यूज़ करेंगे इसके देन हम अपना आईडी सोच करके दूसरी आईडी में ट्राई करेंगे मे बी दूसरी आईडी में आज वारका निकालूँ मैं मेरे पास दूसरी आईडी में वो नहीं है क्या नाम है बैनेट नहीं मेरे को बैनेट 7 करना है दूसरी आईडी में आज ही आई वॉन्ट बैनेट 7 दूसरी आईडी में होगा फार्म
Okay, we got kid. Wait, what the fuck? What the F is this, bro? देख कितना गंदा डोमेन क्यों है भाई? इतना गंदा डोमेन क्यों है ब्रो? ये आर्टिफैक्ट ही नहीं देता है भाई ये। वो मुझे इसका वेपन भी बनाना है भाई तुम्हें, अपनी एनएफ के लिए। मैं अपने एनएफ के वेपन बनाऊंगा भाई आज तो नहीं। आई मीन स्टोन्स आ गए होंगे मे बी, कहूँगा मैं आज कल में ग्राइंड होंगे स्टोन्स। एंड वी गॉट नथिंग। एनएफ के वेपन के लिए मेरे पास सिर्फ रिसोर्स स्टोन्स कम पड़ गए उसके, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें मेरे पास सिर्फ एक टाइप के स्टोन्स कम पड़ गए। वो एक बार कंपनी ठीक है R5 कर दो एनएफ का वेपन, देन फोन्स का डैमेज और बढ़ जाएगा। यो निंजा भाई वेट तुम, अबे यहाँ वाई का क्यों है? वेट यहाँ वाई का क्यों है भाई? नो मेरे को वाई का से बात करना है क्या? निंजा भाई आया क्यों नहीं अभी तक भाई? क्या मुझे इससे बात करना है? निंजा भाई अभी तक तुम आए क्यों नहीं? मैंने एक्सेप्ट तो किया। Monstead पता मैंने बहुत सारे प्रीमोज मिस कर दिया गेंशिन को कंटिन्यू ना करने की वजह से। ऑलमोस्ट 2K के नियर बाय प्रीमोज मैंने स्किप किया है लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। सिर्फ कमीशंस किए मैंने उस 2 मंथ्स के अंदर, बस और कुछ नहीं किया। ये गड़बड़ हो गया भाई, ये गड़बड़ हो गया। मैंने बहुत सारे प्रीमोज वेस्ट कर दिए भाई ग्राइंड ना करने की वजह से। मेक श्योर टू लाइक भाई जिसने नहीं किया भाई। अगर तुम अपने 50-50 नहीं हारना चाहते देन लाइक यू स्टूपिड इज जस्ट लाइक। do and never where you where she here अच्छा तुम you gonna use zongni bro seriously zongni शील्ड बुद्धि से एक दो भाई एनिमीज की भाई। लेट्स गो 3 to 1 कम हियर कम टू मी। Hey you, come to me brother। ओ भाई आई एम नैगिंग सो मच, इसने मैं कॉप नहीं करता। भाई एनएफ में मैंने अच्छा खासा एनर्जी दिया है, तो मैं नोटिस किया होगा भाई एनएफ की एनर्जी इतनी जल्दी वापस आ जाती है भाई। कौन कहता था मुझसे कि भाई एनएफ की एनर्जी खराब है मेरी? कोई तो बोलना था भाई, कौन था वो? भाई इनफ एनर्जी है मेरी एनएफ पे, तुम सबको दिखता नहीं है बस। कौन कहता था भाई? मेरे को बस बताओ एक बार अपना नाम कि किसने कहा था मुझे एनएफ पे एनर्जी नहीं मेरी? इनफ एनर्जी है मेरी एनएफ पे।
हर रोटेशन में NF एंड कोंगम बीना पर मैंने ऐसी एनर्जी सेट किया है कि जो कि मेरे रोटेशन होने तक उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। भाई मैं NF का क्रेडिट इतना ज़्यादा है भाई। आर्टिफैक्ट MSC ओके CRCD है ना, अगर मैं क्रिएट डैमेज दो इसकी जगह तो ओके क्रिएट रेट इससे 31 मिलना है, 76 है, तो 50% क्रिएट रेट तो इस पर अभी भी है। अगर मैं इसको इसकी जगह एक बार कहेंगे व्हाट द फ्रिक कि डैमेज क्रिएट रेट एंड नाउ लेट्स सी व्हाट। ओ मैंने टेनेसिटी चूज़ की, ये सब चूज़ करके है क्या? तो डैमेज क्रिएट रेट अगर मैं इसको ये दूँ तो 1 मिनट कहेंगे आएंगे किनो से लेके तो कितना रेशो हो जाएगा भाई? अब वादा आई मीन आई कैन यूज़ इट बट मुझे इसका सिग्नेचर ज़्यादा पसंद, आई मीन वो जो मैं इस पर यूज़ करता हूँ वो ज़्यादा पसंद है। अभी क्या यूज़ करते हैं, लेट्स सी ये होगा डोमेन कैसे जाएगा। एनर्जी भी बढ़ गया, मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ होगा। एमनेस इज गुड बट मुझे दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। ओके ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। आई मीन इस पे HP है, एनर्जी होता तो मैं इसको थोड़ा सा इंचेंट आई मीन अब करता है ना पे अगर इस पर क्रिकेट अच्छा नहीं जाए 15 क्रिकेट तक विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी। भाई मेरे घर में किसी ने चाय बनाई है, इनको कौन बताए भाई कि चाय के जो अदरक को तुम उसके अंदर क्रश करते हो, क्रश कहते हैं कि क्या कहते हो उसको, what the fuck क्या कहते हो उसे, रुको मेरे को वापस से मैं आएंगे किनो वैशी मैं किनो गए स्विच वो आई एम गुड। मेरा फ़ोन एक्सप्लोड हो जाएगा भाई जितनी तेज़ी नैक कर रहा है ना। आई मीन इसकी वॉइस नैक कर रही है, पता गेम नैक नहीं कर रहा, मेरा वॉइस नैक कर रहा है भाई। ये क्या लॉजिक है भाई, गेम नैक नहीं कर रहा वॉइस नैक कर रहा है, ये क्या मतलब है भाई इसका? फकिंग शिट है भाई। ओ मेरे पास 2 ये पड़े हैं भाई, ये भी पड़ा है 2 मेरे पास। नो इस आई मीन आई कैन यूज़ दीज 2 भाई। ये भाई कितने डोमेन करने हैं आपको बताना, ठीक है? NFA भाई 1 मोर ओके। मेरे को लेवल अप करने की बुक्स ग्राइंड करने, मेरे को अभी देखा मैंने NFA में 80 की 88 की है शायद, 86 की कुछ की है, 100 की नहीं है। तो मैं 2 बार बुक्स भी ग्राइंड करूँगा शायद, 1 बार बुक्स एंड 1 बार गोल्ड ग्राइंड करना पड़ेगा मुझे। मेरे पास 2 पड़े हुए हैं टूटे हुए गैजेंस, तो उनको मैं यूज़ करूँगा। Okay, it is good. I need hydro.
मेरी साउंड गैग हो रहा है, गेम गैग नहीं होगा, साउंड गैग हो रहा है, क्या मतलब है इसका? ओके मेरे को कोई बताएगा, मैं गेम गैग नहीं वो इस वीडियो गैग नहीं होगी बट साउंड गैग होगा, ये क्या मतलब है भाई? ये ऑलमोस्ट एनएफआ की वापस एनर्जी आ गई जबकि मैंने उसका भी जस्ट अंक यूज़ किया है। एंड डोन आई एम डन। कुछ अच्छा नहीं है भाई। ना 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 ना। अब तेरा अब बेगाना हूँ मैं, दीवाना दीवाना समझे ना, ओ कभी खोया है कभी खोया ये कोई। स्टीव एंड बीसी ओके ओके मैं ठीक है 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 बगा। ओके तुमने लीव कर दिया क्या? समझो या ये करे मेरे साइक तो वापस आ गया। मैं सोचा कि भाई तुम्हारे पास नफा आ गई, आई मीन वो तुम्हारे पास तो जो यूज़ करे था अचानक से नफा कैसे करनी तुमने चाहिए। समझो या ये करे है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है। ओके निंजा बगा सेकंड में मैं वाई का पंख करने वाला हूँ। आई डोंट केयर अबाउट एनी थिंग देयर पीपल सेइंग लाइक उसका ये है नीश बिंग में है ये है वो है। आई डोंट केयर ब्रो, आई जस्ट वांट टू प्ले दैट कैरेक्टर भाई, नाइट्स ऑफ वोनियस का वो। भाई मेरा नया दिमाग का भरोसा डॉक्टर का सुझाव कोंगेट हो जाए। साउंड नैग क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। गेम नैग नहीं हो तो साउंड नैग क्यों हो रहा है? अबे जब गेम नैग नहीं होगा तो साउंड क्यों नैग हो रहा है भाई? ये क्या है भाई, क्या कहूँ मैं इसका? गेम नैग नहीं होगा साउंड नैग होगा मेरा, ये क्या मतलब बनता है? तुम सब यहाँ क्या करो पार्टी? ओके भाई नहीं करना भी, कोई कटसीन वटसीन में घुसा देंगे, अभी कुछ नहीं करना है। कहाँ है एनमीज? Okay, I'm out of resins now. Let me just. Where is she? Max. वो कितना बच गया भाई तेरा? ओ एक। आई मीन इतना तो हम कर ही सकते हैं, कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। एक कहाँ से होगा भाई? तभी कुछ है क्या? बुक्स है क्या इसमें? अबे नहीं यार, बुक्स तो नेक्स्ट में देगा ये। Oh, hang na bro. I'm not gonna do this shit right now. कितना पीटी है मेरा सेकंड आईडी में है 62 की पीटी। मैं ट्राई करूँगा आज कैसे भी करके उससे थोड़ा बहुत ग्राइंड करने का। मैंने अभी तक उसमें बहुत कोई मोज है, मैंने बस उससे ग्राइंड नहीं किया। मैं भी आज हो जाए एक 10 पुंग के जुगाड़। 62 72 की पीट हो जाएगी अगर मैं 10 पुंग हो गया तो। बुक्स दे दो प्लीज़। नहीं देगा।
चेंज कितने तो हो जाएगा इनफ ओके एनएफ मैक्स हो गई मेरी एनएफ से टैगनेट भी कर सकते हो क्या भाई कहना है ओ मैं कर सकता हूँ बट मेरे को ये बॉस किंग में बस रेजेंस नहीं है मैंने उसके में भी रेजेंस नहीं है शीट ओ ठीक है तुम खेलो लॉगिन करके खेलो तब तक मैं वो वाइका का ट्राई कर गया तो मैं आया का C2 करो मैं अपनी नेक्स्ट ट्राई वाइका भाई ओके एगमेंटन स्किन बूम 1 2 3 4 5 ओके एनंक्ट इसका डैमेज कम था ओके तो ये रिएक्शन तो इन सब में कॉम्बोज पोटेंशियल बहुत है इसके पास बट ये है कि डैमेज कम है इसका आई थिंक ओके ही कैन मेक क्वाइट गुड भाई ओके पायो डैमेज नॉइस अंट व्हाट द फक एनिमीज कहाँ हैं ओके यहाँ पे स्वंग करते इसमें एंड बूम इसका अंत का डैमेज उतना नहीं है स्किन का है अयाका का एको आ चुका है ओ ये भी अच्छा है भाई क्यूटी पाए मेरी गेंशिन में फर्स्ट क्रश बनी थी अयाका ना सेकंड बनी थी हाँ फर्स्ट तो ये नहीं थी जब मैंने कैज़म का क्वेस्ट लेके आया था तभी से ये नहीं थी देन अयाका बनी थी मॉडर्न वाइज होता है हाइट के अकॉर्डिंग हाइट वाइज वेट बताइए हाइट वाइज मुझे यंगान भाई यंगान ज़्यादा पसंद है भाई किसको यंगान नहीं पसंद आई भाई यंगान के पास दो इतनी सुपर पावर्स है जो कि मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है यंगान की सुपर पावर इतनी तगड़ी है कि भाई वो मुझे अटैक करनी चाहिए ये क्या एको आया या आया का क्या एको क्या वो विद द फक मैंने देख इंस्पायर कर दिया ओके आई डोंट केयर कैसे भी आया का एको है हमें चाहिए तो चाहिए भाई लेट्स गो स्टार्ट लेट्स गो भाई वेट व्हाट द फक मैंने क्या किया भाई मैंने आयाका का ये भी नहीं चेक किया कि उसके इस टाइम क्या है उसके अंदर आर्टिफैक्ट नहीं चेक किया मैंने उसका ओके fucking ass bitch क्रिएट हुआ है मैंने वहाँ पे गड़बड़ कर दिया मेरे को वहाँ पे जो करना था वो मैं नहीं कर पाया ओके नेम इज
भाई मैं फिर वही नहीं कर पाया, फिर मैं वही नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। चढ़ चढ़ चढ़। वो ये कर रहा था मैं यहाँ पे। फक, मैं आया का मैं गई, मैंने गैस नहीं किया। ओके क्रिएट है भाई यार। ये भाई ये ना मैंने इतने टाइम से हैकर यूज़ नहीं किया, ये मेरे को फक करवा गया। मेरे को जंप वाला मूव यूज़ करना है, एंड द थिंग इज इट इज़ काइंड हार्ड। Okay, do it. No. चौदह जगह को what the fuck you doing? बहन के भाई क्या कर गया है तू? भाई मेरी आयक्का भाई, मैं क्या करूँ भाई यार। ये पीसी वालों के लिए ईजी रहेगा भाई, मेरे लिए नहीं है, बट आई एम नॉट गोना है भाई। पीसी में बहुत ईजी पड़ेगा ये, जिनको भी पीसी यूजर्स हैं। भाई फिर मैं गया का भाई, क्या कहूँ मैं भाई। जो ये डैश वाला जो मूव है ना, ये थोड़ा सा वो है। नो ट्राइड ना भाई, मैं भी नहीं ट्राई करना चाहता। मैं आईडी स्विच हो गई, देखता नहीं जब मैंने कहा। अभी मुझे स्ट्रीम स्टार्ट हुए आधा घंटा हुआ, मैं अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता स्टार्टिंग से ही। ये जब तुम ऑनलाइन आओगे मेरी आईडी से सेकंड वांगी, या मैं ऑनलाइन आऊँ सेकंड वांगी आईडी से, मैं कंफ्यूज हो गया। मोना सत्य है डो टीवी। सेकंड अकाउंट तुम खेलोगे? ओके। मेरे को फिंगिंग्स के वेपन पे ट्राई करने का मन कर रहा है, क्या मुझे करना चाहिए? फिंगिंग्स के वेपन पे एक 10 पुंग करना चाहिए क्या मुझे? हिस्ट्री देख तो मैं, हिस्ट्री क्या है वेपन की? 1 2 3 4 5 6 ओके 22 की पीडी है। आई मीन वेपन्स इसमें बुरे नहीं है। मेरे पास फेवोनियस एक भी नहीं है सॉर्ड में, तो मैं कर सकता हूँ एक 10 पुंग कर सकता हूँ क्या? लेट मी सी हाउ मेनी ये बना सकता हूँ मैं, हाउ मेनी विशेस? 24 एंड व्हाट द हेक, कहाँ से बनता है भाई दूसरा? ये अशोक 26। क्या मैं एक 10 पुंग कर सकता हूँ इसके फिनिक्स के वेपन पे? मेरे पास 17 विशेस बचेंगे जितना मुझे पता। नहीं यार, नहीं आया। काश आ जाता यार फिनिक्स के भाई। ये नहीं चाहिए यार मुझे, सबसे बेकार। ओके व्हाट द फक, सबसे वो वेपन दिया जो मुझे नहीं चाहिए था मेरे पास। पहले से जो है साइडिंग नहीं मंगा मैं। ट्वेंटी 22 से 32 हो गया। अगर मैं को 10 पंगूंगा 42 हो जाएगा। फक, तो मेरे को कम, आई मीन मेरे इसको फीक नहीं कम पड़ जाएगा। मैं 50-50 गारंटीड है, बट पता पीटी नहीं मेरे पास।
आई हैव गारंटीड बट पीटी नहीं बचेगी मेरे पास। कॉफ़ी है किंग, ये मेरे को 80 पीटी हिट करना एक सिंगल पैच में। हटो जगह, स्किप नहीं करना वेपन। फिंक्स का वेपन अच्छा है बट नहीं निकालना है भाई। आई एम सॉरी फिंक्स, आई एम सॉरी माय ब्रो। फिंक्स का वेपन दे क्या भाई, व्हाट द फक। Oh man, another 10 भाई। why bro, why 32 42 की बेटी हो गई यार, what the fuck। 42 22 की थी, 20 42 43 ओके 44 45 ठीक है 46 क्या फिंग से वेपन चाहिए मुझे यार। 47 एंड 4 स्टार ये इंग हुआ भाई। C2 हो गया फाइनली। 48 49 यार, ये हार्ड पिटिंग के जा रहा है यार वेपन्स में मुझको भाई। 50 भाई 50 की पीटी पे पहुंच गया भाई वेपन्स में। मैं अब नहीं कर सकता। एक मिनट, इसका शॉप रिसेट कब हुआ है? 3 दिन में होगा। ओके 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 आई मीन मेरे स्कोफिया के पुंग सुने के भाई। फक माई स्कोफिया, आई एम सॉरी माई टू इन स्कोफिया। आई मीन ऑब्वियसली मैं तुझको इस कहे की वजह से पूछा हुआ, अदरवाइज मैं पूछता नहीं। बट स्टिंग C2 हुआ हो गया नाउ, आई कैन बिंग हिम। 50 की पीटी स्टिंग नो। आई मीन मैंने कितनी 28 पुंग की है। एंड मेरा वेपन की हिस्ट्री क्या थी? 28 पुंग की है मैंने। एंड मेरी वेपन की हिस्ट्री क्या है? ये 22 राइट। 22 एंड 28 50 60 70 10 पुंग 60 20 70 20 पुंग्स में आ जाएगा। पर 20 पुंग्स मेरे पास है नहीं यार। शीश भाई मेरे को अब इसको फिक नहीं सेव करना। आई कांट डू एनीथिंग भाई। देख फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया बट आई कैंट गेट इट। आई कांट गेट इट ब्रो। आई ट्राइड माई बेस्ट बट सैडली मैंने सारा स्कोफी के पुंग्स वेस्ट कर दिया। मैं स्कोफी अगर आईडी नहीं आई या फिर मैंने पुंग्स को वापस से ग्राइंड नहीं किया स्कोफी के, तो भाई मैं तो भाई गया। वो मेरे पास कोई टाइम है, मैं स्कोफी निकाल लूँगा। मेरे पास कितना टाइम है? 20 एक मिनट मेरे को चेक करना पड़ेगा। मोबाइल करने का 28 पंगस 28 28 56 डेज का टाइम है मेरे पास। 56 डेज के अंदर 56 विशेस हो जाएंगे मेरे पास। 56 डेज के अंदर 56 विशेस। तो या 56 ये पंगस इवेंट आ जाएगा। 60 विशेस तो मेरे पास हो जाएंगी भाई। देखो 56 पंगस इवेंट तो ये मैं 65 तक की पीटी तो मैं इजीली बना सकता हूँ स्कोफी में। आखिरी दिन तक की काउंट करो, मैं लास्ट डे तक मैं स्कोफी के बैठने के 60-70 की पुंग तो कर सकता हूँ मैं। अगर मेरे को 70-75 तक मिल गई तो भाई इजीली मैं स्कोफी निकाल लूँगा। इतना हार्ड नहीं है। आई मीन लास्ट डे तक मैं कर सकता हूँ। कल से मैं काउंट करोगे तो मेरे पास अभी 56 नहीं 50 डेज मान लो। 50 डेज मतलब 50 विशेज़ तो यास हो गई। 1 डे में कमीशंस एंड वॉकिन मंगा के 1 विश तो हो गई मेरी। एंड बाकी इवेंट में हो जाएगा। वी कैन पुंग हर, I mean we can get her, don't worry. Now let's see how many wishes we have for here. What the fuck? I mean pity. Let's see. Okay, it is 50-50 right? Okay, we last got our Shingongin. Now we have 62 pity and 50-50. Let's arrange one wish from here. Let's go for Ascension Domain. We're gonna get one wish from here. Let's go. TP हो जाना चाहिए। I'm pretty sure मैं इस कॉफ़ी में जुगाड़ करूँगा। मेरे को इतना टेंशन नहीं है। इस कॉफ़ी हो जाएगी मेरी। मेन इशू आएगा मुझे इसमें कौन सा बॉस आ रहा है भाई।
I'm too lazy भाई शिंगोंगिन भाई मैं मजाक से क्या है मैं एक ही ट्राई करूँगा उसके बाद नहीं हो पाएगा मेरे को जितना लग रहा है देन आई एम गोना स्विच Let the mountain's veins boil! Written in the stars. By royal decree. Witness the power of Gawa. Rain outlines your fate. Wings of darkness, come! Delve into destiny. Decided by destiny. Let me scribe. Delves into destiny. Let engraved names echo. Midnight Phantasmagoria. Know my sword, Rain Cutter. Fate is upon you. Let me scribe. Delve into destiny. ओके इस बार हो जाएगा मैंने गड़बड़ कर दिया था उस बार मैंने उसको थोड़ा सा स्लो में किया था लास्ट टाइम नाउ वी गोना डू इट इन फास्टेस्ट वे पॉसिबल इस बार हो जाएगा कंफर्म आई कैन डू इट आई नो आई कैन डू इट नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दिस यूज दिस do this and this Shadows of fate, written in the stars. Midnight Phantasmagoria. Hear the echoes of the valley. No rest for the wicked. I summon thee.
फिर delve into destiny. Bring it. Midnight Phantasmagoria. Letting great names echo. Ring cutter. Let me scribe. Written in the stars. Bring it. Odds revealed. Shadows of fate. Wings of darkness. Witness the power of Varka. Know my sword. Hear the echoes of the valley. Fate is upon you. By royal decree. I knew it, I can do it. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यार 51 हो गया। हमें को अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करने पड़ेंगे भाई, बहुत हार्ड होता है भाई। मैंने अगर हेक्सागोन बफ यूज़ नहीं कर रहा होता ना भाई, अगर मेरी फिशिंग एंड मोना दोनों हेक्सागोन में नहीं होती, नॉर्मल फिशिंग एंड मोना होती, तो भाई मैं उसको नहीं कर पाता भाई। आई न्यू दिस थिंग भाई, बट समहाउ आई स्टिल डू इट बिकॉज आई एम काइंड ऑफ गुड। आई एम गोना लेट मी दिस मच। शट अप। ओके प्लीज गिव समथिंग गुड। अबे तो क्या देती रहती है भाई कैथरीन? आर यू श्योर अबाउट दैट कि तुझे ये सब? ओके 62 63 कम होम बेनेट। आई मीन मैं फर्स्ट आई की पिटी नहीं है ना, व्हाट द फक। ओके हिस्ट्री में सी मेरे पास सुकोज का एक भी कॉपी नहीं है, तो आई मीन सुकोज इज सुकोज 4 की पिटी हुई है उस पर। Now let's do some standard poems. Okay, give me something good. Okay, Bennett. What the fuck? को हम बिना कहने जाते थे। चोंग यून seriously the only character जो मुझे अभी नहीं चाहिए था। I mean it's not bad but भाई मुझे नहीं चाहिए था। 64 इसका आएंगी 5 की बिडी नॉइस। स्टैंडर्ड ओके। चोंग यून किसको चाहिए था यार? मैंने चोंग यून मांगा तुमसे भाई, मेरे को बैनर दे देते, सिंचो दे देते यार। चोंग यून सिंपल मैं नहीं हूँ भाई, जो है उसके पास C6 है भाई। I don't wanna say that, but Chongyos is not that much good. Hi brother. Chongyun is bad now. Okay, 55 की वीडियो की कितनी की? I don't remember. मैंने कमीशंस किया आज के? No. Let's go then कमीशंस करते हैं। Let's go. फोनटेन ना फोनटेन नहीं जाएंगे हम, टेंगेंट करने में। मुना के टेंगेंट। ओ भाई मेरे कोई भी वो नहीं है भाई, मैंने कुछ भी नहीं रखा है भाई। मुना फिशंग भाई, इतने कम टेंगेंट में तुम्हें कैसे सर्वाइव करो भाई, मुझे ही पता है। शिंगोंग इन सीरियसली ओके। डोमेन नॉट अनलॉक्ड येट ब्रो। ओके इसमें ये है क्या? एक्सचेंज, हाउ मेनी आई कैन एक्सचेंज? सो मेनी। नो इन ओके नॉइस।
good. Okay. Ascend, we need this. Go, keep going. Bhai, keep it. Thank you brother, thank you so much. भाई ये ग्राइंड करना इज नॉट माई टाइप ऑफ बॉस. भाई ये बहुत यैप करता है भाई, सीरियस नहीं बताऊँ मैं. दिस इज अ यैपिंग गॉड. मेरे को किसी को इन्वाइट करना पड़ेगा, मेरे को हेल्प करने के लिए. में से जो कैन यू हेल्प मी. आई गिव यू सम कैंडी. लेट्स सी आता है क्या. निंजा भाई आएंगे क्या. ओके मुझे अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करने पड़ेंगे. एक्चुअली मेरे पास कैरेक्टर्स की बहुत कमी है. मेरे पास सिर्फ इतने कैरेक्टर्स हैं. एंड नेबंग वाइज देखो सबसे ज़्यादा हाई पे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है. एंड मुझे इनको करना है. मेरे पास बेनेट भी है. मैंने अपने डेमो को C1 कर दिया है. वाह, मैंने C1 किसको किया फिर. वो जो फ्री आर्टिफैक्ट, अच्छा इसको किया या मोनो को C1 किया मैंने. ओके इस बार मेरे को डेमो को C1 करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई 5 स्टार नहीं है जो मैं C1 कर पाऊँ. So first of all let's ascend her. Oh man. Oh man. Oh man. Seriously. I mean I'm gonna switch. Maybe I'm gonna switch this ID. Oh man. I'm so wishing on it but क्या करूँ मैं. ओके आर्टिफैक्ट्स चेक करते ठीक है. दीज आर नॉट अ गुड सेट. 59 47 ओके ओके 55 148 133 ओके. भाई तेरे पास आर्टिफैक्ट नहीं है. हाउ कैन इज या दिस इज बैड भाई. मुझे सिंचो के पास आर्टिफैक्ट्स नहीं है. मेरे पास वाइका के भी आर्टिफैक्ट्स नहीं है. व्हाट शुड आई डू. ओके आई एम काइंड ऑफ कुक. आई एम काइंड ऑफ कुक द राइट नाउ. क्या कहा सी मेरे पास इलेक्ट्रो सीजन होते हैं अभी इतने, तो मैं अच्छा खासा वो कर बताना पाऊँ. Okay, I think I need to do some ओशनेट तो नहीं कर पाऊंगा मैं. सोंगो देन लेट्स गो. ओ ये वाइका का क्वेस्ट कहाँ से है भाई. वाइका का क्वेस्ट है. वेट वाइका क्वेस्ट भी डाउनलोड करना है. आई मीन वाइका क्वेस्ट मैंने किया नहीं अपनी मेन आईडी में. इसे करके ना मैं मेन आईडी जाऊँ. आज वाइका क्वेस्ट करते हैं देन सेकंड आईडी को बाद में करेंगे. इसको भाई इसको ग्राइंड करना है भाई. वाइका चाहिए इसके अंदर बट द थिंग इज मैप अनलॉक करना है मेरे को पसंद नहीं है भाई. मुझे ऐसा मैप कौन अनलॉक करेगा भाई. इसलिए मैं न्यू आईडीज़ नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता है मैं न्यू आईडीज़ बनाऊंगा वो मेरे साथ ये फकअप होगा. ओके नीव नो वी कांट डू एनी क्वेस्ट राइट नाउ. वो व्हाट ओ फक मैंने वो नहीं किया. बट रुको मेरे को बॉस मार के आना पड़ेगा 3 बार. अपना डेंगे कमीशंस करना पड़ेगा. डेंगे कमीशन नहीं किया था मैंने. डेंगे कमीशंस करके देन स्विच करते आईडी. या वी कैन जस्ट डू द कमीशन एंड switch the ID, switch to our main
ओके सबसे पहले किसी बॉस को करना है. The only boss I can king is this Pio Regiswine. Come here. Okay. Oz, reveal. Let me scry. Rain cutter. Midnight phantasmagor. Decided by destiny. Okay. Nice try, bro. Shadows of fate. Okay. मेरे को फिशिंग का अल्टीमेट चाहिए. No rest for the wicked. I summon thee. My फिशिंग okay, noise. Mona. Okay, we go. Okay, noise. We can use it. Okay, noise. We can use this too. CRCD. I mean, I'm not gonna use this obviously. Boss, can you open your eyes? Fate is upon you. Wings of darkness. Come, sever. Let me weave you a verse. Let me scribe. Curses. Let the mountain's veins boil. Oz, reveal thyself. चीज बूम. ओके इसका तो हो गया. वो अल्टीमेट नहीं आया बता फिर. फिशिंग एंड ये आया नॉइस. ओके इस बार इनको जल्दी मारते हैं. इसे बॉस को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं हम. एंड यूजनेस एंड बेकार. ना इस बार जल्दी मांगो यार. बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने. जल्दी हो गए भाई. Let's go. Hi. Yeah. Shadows of fate. Shadow raven. Let night fall. Written in the stars. Witness the power of the wild. Know my sword. अबे मोना में स्विच नहीं हुआ भाई. फक. मोना में स्विच हो जाता है ये बॉस मर जाता है पूरा का पूरा. मैंने मोना में स्विच नहीं किया टाइम पे. No rest for Hear the echoes of the valley. Let me weave you a verse. Decided by destiny. ओके डन. क्रिएट गेट डैमेज. क्रिएट डैमेज है. क्रिएट नहीं है. ओह डबल अटैक है. नाइस. आई कैन कैरी इट फॉर सम टाइम नाउ. जब तक मेरे को कोई अच्छा आर्टिफैक्ट नहीं मिलता तब तक फॉर दैट टाइम आई कैन यूज दिस फॉर क्रिएट डैमेज. क्रिएट मेन इधर उसमें डबल अटैक है. इस वजह से मैंने उसको यूज़ करने के लिए रखा. अदरवाइज मैं उसको फेंक देता था. उसमें डबल अटैक के लिए कुछ भी होता तो.
क्योंकि मैं क्रिएट वेपन्स दे देता हूँ। Add as वो में भी CR CD है मेरे पास, thank you for वेपन वाइट टेसन में भी है, तो ये सब थोड़ा सा add गोल्ड वोल्ड जो है वो फिक्स हो जाता है हमारा। And now we can switch this ID. ओके, अब मैं वाई का रिक्वेस्ट करने जाऊँ अपने मेन आईडी में। लेट्स गो। एज अ मोर एक्सप्लोरर मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है वैसे कि अच्छा ये इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा, बट एट द एंड मुझे थोड़ा बहुत इन्जॉय करना भी पसंद है। ओके, रीड टू robot. Hey, long time no see, my friend. What's that? You say we met recently for a heart. That always missed it, friend. Every a bird with that missed amazes it, friends. Every second feels like an eternity. My goodness. And after such a grand adventure in Nordka, you must have gathered a quite few stories along the way, yes? Are you perhaps looking for an old friend to talk? Okay. Do you happen to need a bard? One who can turn your tales to verse? If you can, what the fuck? If so, come and catch up with me at Stale Snatch Cliff. That wines is then the wines poured and strings are already turned. A bird, 20. Okay. Alright, Paimon, you are greedy always. I know that. Don't order me, by the way. Okay. यार मुझे वुंफ ग्रेव स्टोन स्वॉर्ड चाहिए था यार स्टैंडर्ड बैनर से। नो आई मीन नॉट टू फॉर्म दैट कॉर्निकल, आई मीन मैं रैंडमली जो स्टैंडर्ड बैनर पे पुंक्स करता हूँ उनमें से। लेट मी सी द हिस्ट्री भाई। ओके, मेरे को लास्ट टाइम टेक्नारी मिला था, मुझे वुंफ ग्रेव स्टोन स्वॉर्ड चाहिए था। मैं अपनी यूंगा को दे देता। विनती वेंटी इज हियर। Mr. Traveler.
ओके वेट एक सेकंड, मुझे अपने फ़ोन को चार्ज करवा दो ताकि मैं चार्ज कर पाऊँ। ओके इट इज़ गोना बी अ डार्क स्क्रीन फॉर 2 seconds। ओके या ओके बूम बूम बूम। वेट वापस से बाइक का यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा क्या? नो इट्स ये कौन था? मिक्का? नो ये कौन है? वेट हु द हेक इज दिस भाई? वो एक इसका कैरेक्टर डिजाइन अच्छा है बट हु इज ही? Cryo vision user. I mean, he gonna be playing soon. Cryo user. Cryo program user, right? Ngay cruise kaya.
मुझे स्टार्टिंग में का सिंचो है, मीका सिंचो, क्योंकि मुझे मीका इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे पोंगाम यूज़र रोजरिया एंड मीका ही है मोस्टली, और ऊपर से मीका ये मैंने सोचा मीका को आउटफिट मिल गया क्या। Yes. Make sure to like and subscribe if you are new. अगर तुमने अभी तक like and subscribe नहीं किया तो। Okay, we are gonna go in a domain. डोमेन में हूँ मैं अब। ये डोमेन वाला चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ये डोमेन एक घंटे तक क्वेस्ट में रहता है। मैं रहता हूँ ना, एक घंटे का क्वेस्ट होता है डोमेन के अंदर, एंड मैं अगर जैसे ही मैंने बीच में क्विट किया दैन वो डोमेन रीसेट होता है एंड मेरे को फिर शुरू से कुछ करना पड़ता है। भाई डेंगू का वेपन के घूम रहा है भाई का बंदा है कि वो उसके वेपन के साथ। आई मीन एग्जैक्टली डेंगू का वेपन नहीं है बट उसका सिग्नेचर तो है। Not bad. What is this? एंड्रियस तो वो है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एंड्रियस तो शायद वो था ना जिससे नोरा जिसको प्यार करती थी, ये भी उसकी तो डेथ होगी बट में भी, या फिर वो
आई न्यू इट। भाई बोयस क्यों अटैक करेगा भाई? ओ करप्टेड है ये, करप्टेड वो बोयस। ओके नाइस। And again in domain मेरे को बहुत मज़ा आता है अगर मैं किसी तरीके से ब्रेक नहीं पाता। That's where it can stand with the expedition. The victors will be returning home soon, so make sure to stock up on wine for the celebrations. P.S. Hope everyone's keeping up with their daily training. I'll be testing you all when I get back to make sure no one's regressed. P.P.S. I wrote individual letters for each and every one of you. Don't forget to write back. Everyone gets one? Wow! Sure writes a lot. Really living up to his name. I guess the Grand Master must have something specific to say to each of us. Even I got one. And I'm part of the white band. Yes. That's our Grand Master for you. By the way, anyone know where I can find the cavalry captain? I have a letter from him as well. You mean Kaya? He said he was meeting a friend from the church at the Angel Shed. Allegedly for work. Said he was exchanging intel. But I'd say there's a 50-50 chance he was just there for a drink. My mom bets they'll need a lot to vanilla faces this. How about we deliver Kaya's letter? And these are the two as well. That would be a great help, thank you. All thanks to you too, Wally. The other ones will help. यो रंजीत भाई कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, तुम कैसे हो? कैसे हो भाई? भाई जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक करो भाई। Very well. But please remember to show respect to the local wolves. कूदू भाई। Okay, let's just go engine share, then we talk to her. Where is she? Engine share. Okay. मैं सीरियस नहीं बोलूँगा इंजन शेयर का पे, मैं जस्ट टीपी है। इंजन शेयर कहाँ था भाई? वो का आई मीन डिंगुक का वो डिंगुक का व्हाट द फक भाई, मुझे एग्जिट ही करना पड़ेगा क्या भाई? क्या ही डम चीज़ है भाई ये, सीरियस नहीं। ओह टॉक टू जीन फक, मैंने उस टाइम रीड नहीं किया था, मैं कहूँगा इंजन शेयर जो है। भाई तो रंजीत भाई मैंने NF निकाल चुका हूँ, NF एंड फिंग्स ये टीम यूज़ करता हूँ मैं। Open the door, let's talk to her. On your night. You're still here? Is it that obvious? नाइस, मैं भी निकाल रहा हूँ फिंग्स। नाइस भाई, आई मीन इट इज़ गुड भाई। मैंने फिंग्स के वेपन पे 50 पीटी तक पुंग के मुझे वेपन नहीं दिया भाई, मैं दिमाग ख़राब हो गया। और मैं अपना 50-50 हार चुका हूँ उस पर 28 की पीटी पे,
जब मैं उस पर ट्राई कर रहा था, लास्ट बैनर पे मैं ट्राई कर रहा था एंड मैं 28 की बीटी पे मुझको वो मिल गई है दिहाया, एंड मैं दिहाया ने करने के बाद मैंने सेव किया था स्कोफी नहीं, क्योंकि मेरे पास स्कोफी नहीं है, बट मैंने उसके बाद वेपन पे ट्राई किया 50 पीटी पे, बट निकला नहीं। अब मैं सारा स्कोफी अपने के सेव करूँ बिकॉज मेरे पास 0 पूम है। आई नीड टू सेव एवरी बिट ऑफ माई पीटी फॉर, आई मीन प्रीमोस फॉर स्कोफी। Okay. Okay. हो तभी वो उसको वहाँ मिला था। When always better to be over prepared than caught off guard. Facing the worst case scenario with no backup plan would have been so far worst. Okay. Yes, I completely agree. The tide can turn rapidly in times of battle. It's a leader's responsibility to prepare for every possible contingency, even if his contingency plan never needs to be put into action. I'm sure the Grandmaster is relieved to know that it's in place. Okay, now we need to go. Okay. वही कह रहा है फिर वही है। ओके मैं वेपन पे 50 की पीटी हो चुकी है। दैट मीन्स ओ मेरे पास एक आइडिया है। ओके
it can be good. I mean, I mean, I don't exactly know कि ये अच्छा होगा कि वो होगा, बट मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास 50 की पीटी है वेपन बैन पे, मैं उसको सेव करूँगा एंड मैं कहूँगा इस कॉफ़ी के वेपन पे पुंग नहीं माविका के वेपन पे पुंग या माविका आने वाली ना इस कॉफ़ी के बाद या माविका के वेपन पे ट्राई करूँगा मैं। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मैं दोनों बार या मैं 2 बार 50-50 जीतता हूँ वेपन बनने पे। आई होप इस बार भी जीत जाऊँ। बेटर देन नथिंग भाई, कुछ तो मिल गई। वो ग्रेव स्टोन मिल जाएगा मैं हारू तो नेक्स्ट टाइम पे, नॉट दिस टाइम। जब मैं इस कॉफ़ी निकाल के पूंगा या तो इस कॉफ़ी के बाद जब मैं वेपन पे पूंगा तब। Okay, nice. Please allow me to once again express my sincere condolences regarding your late father and the incident with Eric. I make absolutely no excuse for his crimes. I hope you will give some serious consideration to the question I asked you before I left. I'm sure you're tired of hearing me ask by now. The Knights of Favonius will always welcome you. That's all there is to it. Whatever details I chose to omit are in the past. Dragging them back up now serves no purpose. Mm-hmm. I wasn't seeing the full picture. I've had a lot of time to reflect since then. But one answer remains unchanged. I'm not rejoining the Knights of Favonius. Grandmaster and the acting Grandmaster. Too upright and honorable. I can't see the shadows that lurk beneath them being the size of the organization they need. They need someone on the outside to keep watch vigilantly. Every time I've heard you repeat that argument, I actually don't disagree with the first part of what you said. But don't you think someone can keep tabs on things from the inside? When you join an organization, you're bound by its rules, no matter how free it may seem on the surface. You think so? Never mind the names. Have you honestly ever been bound by the rules of the church? Good question. Have you considered that maybe that's why I chose to join the church and not the means to begin with? Hmm. Alright, make sure to like and subscribe, guys. Okay, Kaya. What should I report
Dinker. My reply won't be a long one. As usual. I'm sure Varka won't be surprised. Now we need to leave. Where is she? Where is she? Is she going up over here? Why are you here, bro? People like Kaya and I, and then there are those who are true champions of justice to the core. Those people are the most susceptible to being driven to extremes by great upheaval. It's happened in Mondstadt before. Not only that, but it happened to a knight of Boreas. That'll really hit home for Varka. And that's why his nagging is even more persistent than usual. Yeah. So no one's told you this before? The lineage of the Knights of Boreas had nearly been extinguished twice in history. The first was at its inception. The second was the case I was alluding to. Oh! Wasn't Jean telling us about this? Wait, and then we got caught up talking about the expedition, and we never got around to the second time. I happened to hear about it from Varka once when he was drinking and started yammering on. The second crisis in the Knights of Boreas lineage. It was 500 years ago. Although the Knights of Boreas are meant to be intermediaries between humans and wolves, in practice, very few of them have been truly recognized by Lupus Boreas over the past millennium. Of those who have, the best known are the first Knight of Boreas, Ravenwood, the wolf pup Rostam, and Varka himself. But 500 years ago, there was one who earned the respect of Boreas even before gaining the title. He was a disciple of Rostam. They thought he would become the mightiest knight of Boreas who ever lived. He was the perfect knight. Righteous, principled. His name was Roland, the blood-stained knight. Yikes! Bloodstained Knight? That sounds a little ominous. Well, apparently his original title was the White Knight. But he lost countless comrades during the Abyssal Calamity 500 years ago, including his tutor and mentor, Rostam. The endless bloodshed stained his sword and armor a crimson as deep as black, transforming the White Knight into the Blood-Stained Knight. After that, he threw himself completely into battling monsters, leaving Mondstadt and the Knights of Favonius behind. To this day, no one knows his final whereabouts. It's hard to say whether the loss of an important figure in his life is what drove him to the point of obsession, or whether he was already too far gone to save. But had he known that the Knights of Favonius would always welcome him back, perhaps things would have turned out differently. So if you want my opinion, the reason why Varka keeps asking Diluc to rejoin, despite knowing that he'll never say yes, is to let him know you're not alone. After all these years, he's still as persistent as ever. Just like how he used to be with me. Huh. Turns out Varka's a lot more thoughtful than he lets on. Paimon had the wrong idea about him. Anyway, there's still something about this whole Boreas business that Paimon isn't really getting. Wasn't Andreas a god in Mondstadt thousands of years in the past? If so, why did Jean say that Boreas and the Wandering Knight only arrived here just 1,000 years ago? Plus, Paimon's super curious about what happened to Roland. That's a great idea! Jean said he hasn't been showing himself much lately, but he always seems happy to oblige whenever you show up. Let's go!
वेट वाइल्ड हंट यहाँ कैसे आ सकती है भाई? वाइका के पीछे पीछे? ओके, आई मीन यू आर कुक्ड गाइस, आई एम नॉट गोना हाइड. Close your eyes. Be silent. Do not fear the dark. 500k? I'm not sure. फाइव नहीं, फाइव नहीं नहीं नहीं. Stop right there. That's me. The 2 letters I gave you, who are they for? 2 letters? Wasn't it 3? Okay. Well, Paimon's coolest naive expression doesn't appear to be marked. Hey! What are you trying to say? Wait, what are you trying to say, huh? Huh? I'm not passed a test? Really? Huh? She didn't even realize she was taking one! You may dispense with your suspicions. The Wolfpack has borne witness. Who the fuck that person is? Bogus. Attackers showed no ability to disguise themselves this time. If the boss of Wilmington has vouched for you, I guess I should apologize for doubting your wisdom. Fortunately, my experience in not guides you to waste. Turns out the wild horn don't feel the same when you stab them. They didn't stand a chance. Something seems wrong with our old wolf. Go on. You should check on him. Okay, don't tell me he is turning to corrupted bomb or something. Never protect me. Protect me enough. Okay, no, he's as usual. Okay, here we have Razor. Whisper is not injured. So weak. Am I not strong enough? भाई 20 से अपनी तारीफ सुनना इज काइंड ऑफ रेयर. The Wolf King, Andrews, was particularly adept in this art. Otherwise, no remnants of his soul would have survived to the present day. What's that? Turnip, Mark? What are you doing here? Maybe the grown-up animal guided me here. For it appears that someone is in need of a tale from the distant past. And our wolf friend
Lord Boreas. Do I have your blessing to share this story? As you wish. Lupus Boreas wandered the frozen tundra and stumbled into the Seelie Hall. Enchanted by their song, tender as the dawn starlight, and curious about the ways of humankind, the wolf bade farewell to his home and set off for the city to the south. As the high tower crumbled and the fierce winds fell silent, Lupus Boreas, who once had hunted with the storm winds himself, looked within and inquired, was the shelter he provided for humanity really any different from that given by the reclusive king in his tower? The wolf entrusted those under his protection to a new god and quietly returned to the frozen north. There, in a palace long since abandoned by its former master, the great wolf closed his eyes and slept. 500 bitter winters passed, then 500 equally frigid springs. He slumbered undisturbed until a night stumbled in from the cold, just as Lupus Boreas had once done at the Seelie Hall, and awoke him at long last. The night asked the wolf to join him on a journey south, to see once more the land that had all but faded from his memory. The gentle wolf, unwilling to refuse the human's earnest plea, split his soul into two halves and left his home once more. Seeing how the ice and snow had given way to verdant plains, hearing the laughter and song that now filled the once somber city, the aging Lupus Boreas turned to his friend, the god of Animo, and remarked, "So, this is the world the humans dreamed of." Though the night's journey was not yet over, the wolf chose to bid farewell to his companion here. He had written the end to his story. What knowledge he had been gifted flowed into the land. Everything he was, he gave unto the world. Well, that's how a bard would tell the tale. Lord Boreas, is there anything you'd like to add? There is no need for you to ask that question. So that's what happened. You returned to Mondstadt with that knight 1,000 years ago, and then, for the sake of the new Mondstadt, you... You need not feel remorse on my account. That was my answer, my decision. If anyone should feel regret, it is the part of me who remained in Notcry. I fear Andreas has not found peace in his heart even to this day. That is surely why those vile aberrations were able to exploit his weakness, sowing the seeds of all the turbulence that has ensued. But we followed Boreas' trail in Notcry. We investigated and discovered no signs of instability. Andreas should still be slumbering by the lakeside. Perhaps all the recent turmoil in Notcry has had unforeseen consequences. And there's more. I detect another familiar scent from across the ley lines. A scent that reeks of blood. Oh, the White Knight who became the Bloodstained Knight? The mightiest knight of Boreas? But wasn't he from 500 years ago? You think he's immortal or something? I remember him as just a man. His lifespan should be no longer than any other of his kind. But before he severed his connection to Boreas, his final destination, it was the ancient kingdom of Conria, as you call it. Beyond that, I know not if he lived or died. If you want to get to the bottom of this, I'm afraid you'll have to make another trip to Nodcry yourselves. As luck would have it, another old friend of ours just so happens to be free right now.
If you ask him nicely, he might give you a lift. That could save you a lot of time on the road. No wonder I can suddenly sense the East Wind's presence. If even Mondstadt has been affected by the fallout, Nodcry must be in real trouble by now. I hope Varka can handle it. Varka? Is he in danger? I believe too many passengers would slow our dear friend down. I fear he only has room to carry one person, along with perhaps a diminutive companion. Alright, wish it could be me, but I accept that we should send our strongest warrior to fight Nodcry's battles. I'll stay here and deal with any wild hunt that try harassing Mondstadt. It'll be a good chance to try out some new moves. I stay in Mondstadt too. With Traveler's help, Varka will be safe. Razor, give me your iron claw. Golden-haired traveler, give this token to the current knight of Boreas. It is a wolf spirit. It contains my power and thoughts. Though I have given him a piece before, this should bring him new strength. The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and sharpening their claws and fangs. But human hearts and flesh cannot bear the soul of a wolf directly. It would be akin to forcefully merging a human and a wolf into one being. They would descend into chaos. To prevent the entanglement of souls, the most I can do is temporarily house my power and thoughts within claws and fangs wrought of steel. Although, truth be told, that knight does not lack for power. What he needs more is the thoughts within. But I shall leave this for him to explain. The Great Wolf King of the North remains strong for now. Besides, do I not have the protection of my Lupacol? I will protect Lupacol. The North and Varka, I leave to you. Just give me the word whenever you're ready. Any questions before you set off? Better ask now. You'll probably have to hit the ground running when you get to Nodcry. The root of this turmoil lies with the remnant soul that Andreas, Dominator of Wolves and God of the North Wind, left in Nodcry. He once left Nodcry and braved the blizzards to confront the God of Storms and claim the right to rule. Yet even as the tower fell, he chose to abandon his claim. Instead, he returned to the north and slumbered for 1,000 years before finally journeying back, under the name of Boreas, with the first knight of Boreas to witness the new face of Mondstadt. When the wolf spirit could no longer maintain his physical form, Boreas chose to pour his power into the ley lines. With that, he became the North Wind of Mondstadt, as he is still known to this day. Any questions before you set off? Better ask now. You'll All right. Over to you, Dvalin!
The night of Boreas awaits below. We must part ways here. Barbatos and I have other plans. We will meet you again later. Alright! Hey, wait! How are we getting down? Hold the line! The enemy's on the brink of collapse! Grandmaster! It's... Ha! Reinforcements! It's about time! And Paimon too! We're just about hanging in there. Most of their grunts are taken care of now. Their leader's gonna have to make a decision soon. Fight or flight? What will it be, mightiest knight of Boreas? As expected, this hastily summoned Wild Hunt horde is nothing but a disorganized rabble. A mere shadow of the forces gathered by the Rahir of Solmari. But they have served their purpose. I now understand your tactics, and you, in turn, understand mine. This is fair. This is the way of chivalry. Farewell, heir to the knighthood of Boreas. Whether you choose to resist me or not, I shall set right the injustices of this world. In the name of the blood-stained knight. Guess they're retreating for now. So that Wolf of the North look-alike, that was Andreas? But why would he be leading the Wild Hunt? And why was he talking about the Bloodstained Knight? Ugh, forget that. We can save the details for later. He was the enemy boss, right? Are we just gonna let him get away? There's no point chasing after him. We've crossed blades already, and it ended in a stalemate. Right now, there's nothing we could do about him. True. We're still not certain of his true identity, but whether he's a god corrupted by the Abyss or a legendary knight, killing him might be just about possible, especially now that you're here. The difficult part is, we can't kill him right now. Huh? What do you mean? Is he immortal or something? No. Judging from our skirmishes so far, I don't think he's got any special abilities of that caliber. Nor does he have the ridiculous level of power wielded by the Five Sinners. But, compared to Rerir, our current foe clearly has a better understanding of how to exploit Nodcry to his advantage. Particularly when it comes to Andreas' remnant soul. Exactly. Sounds like you realize what the crux of the issue is. I managed to cut off a sample from our foe, which Albedo and Durin are analyzing as we speak. Meanwhile, our other allies should be making their way home from their own battles by now. Let's discuss this further when they're back. We still have some big challenges ahead before this expedition can finally be declared a victory. You look worried. Relax. It takes more than a little rainfall to extinguish my lamp. The meeting's probably gonna be in the biggest tent, right? Looks like a bunch of people are there already. Why don't we go chat with them?
Hey, Honorary Knight. Looks like pretty much everyone's here. Albedo and Durin are just wrapping up their analysis. You want to wait for them here? That works too. All right. You keep gathering intel. Hey, Honorary Knight. Albedo and Durin are just wrapping... Great! While we're waiting, could you update me on the situation in Mondstadt? And that's where things stand. The Wild Hunt is no longer under the Reikir of Solnari's control, but it has been reborn from the ashes and is now launching widespread attacks. Intel from the Frost Moon Scions and the Curatorium of Secrets corroborates this. No disturbances have been detected in the space where Rere resides. What we are facing here is a completely new foe. Summarizing current situation. To confirm, the present leader of the Wild Hunt is the creature resembling a wolf. Andrius, god of the North Wind. More precisely, it's the external will that has seized control of Andrius' spirit, namely Roland, the Bloodstained Knight. Whoa. Hold on. I'm completely lost. Isn't Roland some Mondstadter from like 500 years ago? How'd he suddenly get wrapped up with a god from 1,000 years in the past and the present-day Wild Hunt? Allow us to explain that part. Are you familiar with compensation mechanisms? When an organism sustains damage, relevant tissues will undergo changes to offset the loss of function. For example, when one kidney is damaged, the other will be strengthened to compensate. Or, when a main artery is blocked, the collateral vessels become more active. Similarly, when the Wild Hunt lost their leader, the Abyss harnessed the memories that flow throughout the ley lines to fashion a new one, fit for the present circumstances. That new leader is a mirror image of Roland, the Bloodstained Knight. Right. No matter how strong the compensation is, it will never quite match the functionality of the original organ. The Roland replica can't possibly imitate Rere's overwhelming power, nor his ability to disguise himself as others. So, the Abyss made use of the connection between Roland and Boreas to compensate for this lack of power. The replica corrupted and took control of Andrius as he slumbered by the bank of Eimsvartnir, ultimately manifesting as the giant beast that you all witnessed. However, exactly why the Abyss chose Roland to mimic, and indeed how it was able to do so, remains unclear. I guess he must have gotten caught up with the Abyss or Nodcry somehow during his wanderings through Tevat. But we can keep those questions on the back burner. Okay, Paimon gets all that, but what did you mean when you said we can't kill him right now? We can't kill him right now because a dead god may prove more dangerous than a living one. From intelligence gathered during the expedition, we have reason to believe that the power released when a god is felled can have catastrophic consequences for us mortals. Worse still, the wrath that remains after a god's passing becomes a source of endless turmoil. Once god remains contaminate the land, they will persist for thousands of years. This land has already been ravaged by the Wild Hunt. If we add god remains to the mix, it'll be like adding salt to an open wound, placing everyone who lives here in perilous danger. Query. While I can indeed find records of disasters caused by god remains in my database,
There also appear to be cases of gods dying naturally with no ill effects. In that land, the passing of the Pyro Archon's flame is a common occurrence throughout history, and even the part of Andreas who remains in Mondstadt has experienced death once before, has he not? Great question. Glad you asked. Honorary Knight, you said Lupus Boreas gave you a token to pass on to me? Please, present it now. It should help explain things faster. Come forth, Boreas! This form has come to the end of its time. I'm afraid I can accompany you no further on your journey. My soul will fall into silence, and my power will flow into the ley lines of this land. Perhaps this is all that a wolf can hope to do for humankind. Do not grieve for me, for this is the end I have chosen. Instead, remember that one day, your wandering too must come to an end. Where and when shall that be? A final wish before I slumber. Sing me a song. That melody you so often hummed in the taverns. You saw it too. You must have keen powers of perception. Not that it surprises me. That was Boreas' final thoughts before merging with the ley lines. It's the reason Mondstadt remains unharmed by his god remains. In his final moments, he made a choice to give everything he was to the ley lines. All to protect Mondstadt from harm. Sounds like Andreas spent thousands of years searching for his place in the world, too. Yes. And now our task is to return the answer he found, the decision he made, to Andreas' heart. Only then can he break free from the corruption and control of the Abyss, and make that decision once more. I see. I would say that planting thoughts inside the mind of a god sounds a little far-fetched, but since it was his own wish to begin with, it sounds feasible to me. Wait, we already have a perfect solution? Then why are we even having this meeting? Let's go do this thing! Ha ha ha. If only it were that simple. Unfortunately, this one thought alone is unlikely to be powerful enough. We need to find a way to make the thought within this sword stronger and more resilient. For now, Boreas needs all his remaining strength to fight against the abyssal corruption to Mondstadt's ley lines. He can't afford to send us any more of his power. However, since his form was unstable during his journey with the first night of Boreas, many wolf spirit fragments were left behind along the way. If we can collect those fragments, we can use them to strengthen the decision to merge with the ley lines. So we need to retrace his steps and look for random fragments? But they could be anywhere between Nodcry and Mondstadt. It'll be like looking for a needle in a haystack. You don't need to worry about that. There's a few fragments left to gather in Nodcry, but apart from that, most of them are already inside this sword. I've been collecting them during the whole expedition. Huh? Wait, really? I mean, it's an expedition, not a stroll in the park. Each step of the way, we've been hard at work planning for every possible contingency. Not just the wild hunt in the Abyss, but ancient gods remaining in Nodcry. Sounds like this plan was a long time in the making. It's almost as if you foresaw the future. As a matter of fact, I did.
I caught a glimpse of fate's reflection, but I can't take credit for it. It was all thanks to the help of a few friends. Still, all I foresaw was that an abyssal calamity was brewing in the north. Had I known more, we could have saved a lot of energy. Instead, we've had to make best guesses, prepare for every possible scenario. If all that preparation went to waste, all the better for it. But anything that proved useful, we knew we'd be grateful for down the line. Sure is. Just one crucial step remains. We need to gather the last few wolf spirit fragments scattered around Nodcry, and use them to make the thought within this sword as strong as it could possibly be. According to what Boreas told me before we left Mondstadt, his form was at its most unstable at the beginning of his journey. That means the fragments here should be the most powerful ones. But of course, we've been tied up fighting battles since the day we set foot in Nodcry. First with the Wild Hunt, then with the Doctor. So, it wasn't until recently that we were finally able to confirm the status of the Wolf Spirit fragments. We now know there are 3 left to find. Okay, so 3 more mini expeditions to go. I managed to gather 1 fragment before Roland reappeared. I also have a confirmed location for the second, which I'll take care of in short order. As for the 3rd fragment, we've identified a general search area to focus on, but we'll need all hands on deck to pinpoint the exact location. The final snag is that since our foe is a replica of Roland, he too will be aware of Andrias' history. He's sure to try and sabotage our plans by any means at his disposal. So everyone needs to bring their A game. With our foe being from Mondstadt, it's our duty as Mondstadters to defeat him. And since the Wild Hunt is involved, the Lightkeepers will provide their full support. The Clink Clink Krumkake craft shop will also help in any way we can. So what do they need me here for? Wait, I think maybe I signed a contract at some point. Didn't exactly scrutinize it though. I mean, who actually reads those things anyway, right? Ah, great. Knew I could count on you all. Lastly, our friend from the Curatorium of Secrets will provide intel and relay battlefield communications. Looking at you, Yehoda. So, he'll be darting back and forth across the battlefield, dodging the Wild Hunt and the shadow of an ancient god. I'm impressed by your courage, Miss Yehoda. Rating for Yehoda updated. Higher quality ingredients will be used to prepare your future meals. Darn it! I should have known this payday wouldn't come that easy. I'll deal with the second Wolf Spirit fragment, which we already know the location of. The moment you make any progress with Fragment 3, be sure to give me an update. Traveler, could you join me in retrieving Fragment 2? I have a feeling that your unique constitution might come in handy. All right, time is of the essence. Let's move out, people. Dismissed! Alright, मैं इसको अब कंटिन्यू करूँगा भाई। व्हाट द फक, मैं 4 घंटे का जाता भाई, 2 घंटे हुए हैं भाई। मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, मजाक से। मैं थका हुआ था जब मैं आया था, एंड नाउ आई एम गेटिंग बिट मोर टायर्ड। मे वी डू इट टुमारो कंटिन्यू करेंगे इस क्वेस्ट को, एंड देन वी जस्ट कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।